First of all, I would like to thank Dr. Sharda Jain ma'am again on taking up this topic again and again, because the more we talk on it, the more we can sort of discuss it and get our minds clear and get the doubts clear, since how we interpret, each one is interpreting the law differently and according to your own convenience we are interpreting. So we have to, when we generally discuss all this, I think things can become clearer, and our seniors, Brigadier Sharma sir, Dr. Sonia Malik ma'am, Dr. Sharda Jain ma'am, and all the other the seniors that we have, plus our colleagues who have joined, we all can put in our sort of minds together and fight it out and understand it first, so that before it becomes a law, maybe if anything can be proposed to the senior and to the ICMR before anything can be changed. So we have this wonderful panel today where we would be discussing. We have Dr. Jyoti Agarwal, Dr. Seema Sehgal, Dr. Aruna Saxena, Dr. Jyoti Bali, Dr. Poonam Goyal, and Dr. Sarita Arora, who would be discussing on this topic. And we have our experts, Dr. Sharda ma'am and Brigadier Sharma sir, Dr. Sonia Malik ma'am. So we would be taking your opinions in between. So is it this screen visible here? Yes. Okay. So should... Yes, visible. Just put it on slide share. Oh my God, now I cannot see anybody. It's okay, just put it on this thing. Put it on slideshow. If I put it on slideshow, then it will become, I can't see anybody. If you don't want to put on a slideshow, you can see without slideshow, you can see everybody. Yes, ma'am. We can see. Don't put it on a slideshow. Just get started. Without slideshow, I can see my slides, a bit of my slides and bit of everybody. So I think you can get started. We can see it. Okay. So now that means from what Dr. Shivani has told us, we understand that we have three things. We have a art clinic, we have a ART bank, and we have a surrogacy clinic. Now, as we all have started getting forms from ICMR, now while filling up these forms for registration, they are asking the name of the director, the name of the in charge of the clinic. So, can the director and in charge of the clinic be the same person? Anybody can take up the question. The director and the in charge of the clinic have to be different, or they can be same, and can it be a non-medical? What I know till now, they can be different persons also, but the important part is that they should be medical only. The director and in charge can be same also, and they can be different also, but both of them should be medical. This is what I know. I will make it clear. Yes, ma'am. As people who are registered with the ICMR, things are very, very clear. See, not only we had a registration, we have had a re-registration after 5 years, They want a person who's the medical director. Now, the person has to be medical. Then there has to be in charge of the IVF center. The medical director, you can say. Uska naam hai medical director. That person has to be different than the in charge of the IVF center. Like in my place, I am in charge, while the medical director of the show is Dr. Jyoti Agarwal. It has to be two persons. Similarly, the IVF expert cannot be the andrologist also. It means if you have a male IVF expert in your place, that person cannot be andrologist. Andrologist has to be different. Male IVF expert has to be different. So what I'm trying to say, there's nothing to get worried about, I think, These things, people who are already registered with ICMR, they're already following the things. कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है. कुछ भी इस चीज में डरने की जरूरत नहीं है. बहुत ही streamlined है. But one thing is that person cannot be a non-medical.
This is what I had an understanding, because मैं तो इसको IVF पढ़ाती हूँ, तो उसमें मैं इसको ART बिल को भी अभी तक पढ़ाती रहती थी, जो कि which was not cleared by the government. But the difference has not been people who are used to PCP and DT Act. It is going to be on the similar lines. Similar boards will be there state level. The similar board will be there at the central level. You don't have to get worried at all. मतलब दिस इज व्हाट आई फील. जैसे आपका पीसीपीएनडीटी एक्ट है, पर अगर पीसीपीएनडीटी एक्ट में आप फंस गए तो आपको बहुत जल्दी से निकल नहीं पाओगे. ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर. इसमें भी अगर आप फंस गए तो जल्दी से निकल नहीं पाओगे. तो इसलिए, और वो जो लोग गलत काम करते हैं वही लोग फंसते हैं. जो लोग गलत काम नहीं करते वो फंसेंगे नहीं. बिल्कुल जस्ट लाइक ए पीसीपीएनडीटी एक्ट है कि भाई आपको रिपोर्ट भेजनी है तो 5 तारीख को भेजनी है, 5 तारीख से पहले नहीं तो बंद हो जाएगा सेंटर. इसमें भी अगर आपने रिपोर्ट नहीं भेजे तो 5 तारीख को सेंटर बंद हो जाएगा. तो ये सब चीजें तो you have to discipline yourself. I think you don't have to get worried about it. This is what I wanted to answer. Madam, there are two things in this. Sonia must be also saying the same thing. Yeah, Sonia I'm saying the ma'am. same, but what I'm saying is here they have created another entity called the ART Bank. The problem of this non-medico thing comes there, I think, because over there is nothing written that it has to be a medico only. To actually the guidelines for formation of the ART Bank have not come in as yet. Dr. Sonia, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको. One thing is very clear. You should not get worried about the insurance. No, I'm not worrying. I'm saying ART Bank. ART Bank. देखो, सीमन बैंक्स ऑलरेडी है. वही सीमन बैंक्स में भी आपके गैमेट्स में बैंक हो जाएंगे डॉक्टर साहब. उनकी फिलोसफी जो होगी, जब ये बोर्ड्स बनाएंगे, अपने रूल्स फ्रेम करेंगे, दे थिंग्स विल फॉल ऑनलाइन. हाँ, तो ICMR अभी मांग रहा है ना. ICMR रजिस्ट्रेशन मांग रहा है. ART बैंक की ना फॉर्म आया है from ICMR saying whether you want to become a clinic or a bank. People who are opting for a bank are having this problem. that कि उसमें मेडिकल डायरेक्टर कौन होएगा और इंचार्ज कौन होएगा. Because मैडम वो वाला फॉर्म हमको भी भेजो. हमने शायद ईमेल मिस कर दी होगी. नहीं, मैंने तो भरा ही नहीं है. मैं तो बिल्कुल. There are two forms. There are two forms. Yeah, there are two forms. One is for the ART bank. One is for the ART clinic. For the ART, now another question comes. Can the director of ART bank and clinic be the same person? No. They are two separate entities. Not at all. So the same person cannot run both the things. So you have to decide either you want to run a bank or you want to run a clinic. Now in the ART bank, can the person be a non-medico? That was what Dr. Sonia ma'am was. Yeah, that's what I'm saying. Was discussing. That is not clear as yet. That is not clear. Okay. But in a ART clinic, the director has to be a medical person only. It has to be a medical director. That we are all clear. And is it that the relative, they should not be relatives, the ART bank person and the IVF clinic person, they should not be relatives? ऐसा भी है? They are not to be relatives. Yes. But the other thing is that. Sir, you want to say anything on this? You must be having some any insights, sir. Yeah, the thing is, the centers who are, running very large numbers. So definitely what I presume is that they are going to open a parallel ART bank as well. They will do it. Yes. But only thing is, they will, because they can't have it on their name and not in the same premises. It will be a separate premises, separate name, and also the medical director or the in charge will be separate. Now, whether can be relative, well, I think somebody's sister may be a gynecologist. She may like to run ART bank. And the brother is running a ART clinic. I do not know why they should bar that. The relatives cannot run, sir. The relative cannot run the bank and the clinic. So that is very clear. No, she spoke, there are two sisters. Okay. One is running the ART clinic. So why should other sister be not allowed to do the ART bank? डॉक्टर साहब हमें परिवारवाद से दूर जाना है. क्यों हम उससे जाएंगे? प्रोफेशनल दोस्ती करेंगे ना डॉक्टर साहब इसमें. I know there are people who are doing internationally, allowed semen banks. They will only become an ART center. Yeah. अभी आप सीमन कर रहे थे, अब ये भी गैमेट्स को भी करो. No. The sister is an independent entity, isn't it? Now Mulayam Singh daughter-in-law has joined BJP.
तो ज्वाइन करिए, वो योगी की कजन है डॉक्टर साहब, वो योगी की कजन है इसलिए वो ज्वाइन कर रही है. That's what I'm saying, na. So now two sisters or two brothers, they are different entities. They want to run, and he or she may not be providing to his own sisters. They may be giving to all other people. I think the डॉक्टर साहब उसमें related. स्टकअप नहीं होना, ये परिवारवाद से वो छोड़ दो जिसको, इसको परेशान नहीं हो उसके बारे में डॉक्टर So साहब. it is not a very complicated thing we should make. जो ART बैंक चल रहे थे, they only now the another thing that will come is this something very very confusing now. Now I want all the panelists to think and tell us about it. Since ART banks will be responsible for ovarian stimulation, oocyte pickup, and cryopreservation of oocytes. Somewhere Dr. Shivani was saying that ART banks will be only providing oocyte donors. But here I am interpreting it here differently. Now here how each one is taking it, so we can have a discussion there. Now, according to me, what I understood was that ART bank will be responsible for stimulation, for pickup, for cryopreservation of oocytes, where the procedure of ovum pickup will take place. Whether that means that the doctors, there will be doctors in ART bank, they will be doing the pickup, and also does that mean that we would be dealing only with the frozen oocytes? And would the pregnancy rates now suffer because we would be dealing with the frozen oocytes and not fresh oocytes? So I want opinion of the house here. See, I just want to add on over here. You know, I was part of the ART bank committee in the ICMR. So we had a discussion on that. So ART bank will have to have her own gynecologist, and she is going to do the pickup. The embryologist is going to freeze the oocytes, but they are not allowed to make the embryos. That's all. So Yeah, right. And so just to clarify Dr. Jyoti's point, Dr. Jyoti, you are right. At one place, it says that the ART bank will provide the oocyte donor, but at the other place, it says that they are going to provide the gametes or the oocytes. So there is just one line which is ambiguous between the two. yeah. So the thing is, What I gather is that ART bank will give us oocytes. We will have to take those oocytes. What Sari is saying that they will have their gynecologist, she will do the pickup and all, but it is not clear from here that she can tie up with some IVF lab to do and do the pickup there, or the IRT bank has to put up their lab to do the pickup. Is Jyoti Bali here? Is Jyoti Bali here? Madam Dr. Jyoti Bali. Here I will tell you, I am not going to take a name. There are already ART experts who do not have an IVF center, but they are recruiting the donors and they are stimulating it, and they are taking to different centers and making an embryos. So there are people, they are stimulating it and they are asking people like Dr. Shada Jain, I have a lady ready, do you want a person? They have stimulated. So that kind of work has already started. They have to only tie up with this semen banks. I'm not going to take a name. But that will be allowed or not according to the law. Are there who are doing it. So that means the pickup can be done at any other clinic also? That is not clear yet. No, madam, if you read the documents of the ICMR on the ART bank, which never saw the light of the day, in that it was mentioned that the ovum pickup will be done in the ART bank only, and oocytes will be frozen there only. Absolutely. So this is something different. Shada Jain ma'am, we have to have the doctors there only in the ART bank who would be doing stimulation, doing pickup and freezing the oocytes. Those frozen oocytes, I mean, Will be provided. would be provided to the art clinics, and then whether the cost, how it would be transported, how many would be given, so that there would be those gray zones. What would be the cost? Madam, already the work has started. Only these ART people who have nothing to do with the IVF center will join hands with the semen bank, and they will start doing it, all the activity there. Yeah, those gynecologists will join them, provided they know how to do the pickup. Because there are many, places where they are just stimulating and giving you the stimulated oocyte donor. Now the donor is ready. No, but now if Dr. Sharma, if now
we are going to have stringent laws of registration for the IUI procedure even. So do you think stimulation will be allowed at these clinics without registration? No, it will not be allowed. So ART will not banks, be allowed. ART banks will be, registered. ART banks will have to have everything under their roof. It cannot be, clinics doing stimulations and then bringing the donors. It can't be like डॉक्टर that. साहब ART बैंक को क्या प्रॉब्लम, प्रेमिसेस होना चाहिए और आदमी 30-40 लाख रुपए लगेंगे, सारा काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? No compensation is allowed. कोई payment, donor का payment ही नहीं specify है. They will have who will come. There is no payment specified. Shivani, let me be very frank with you. When you do not know, you get confused. The lawmakers will make things so very easy. Just relax and take pranayam. Do just pranayam and relax. I just have a query. If ART bank is doing everything, what will ART clinic do? They will only do embryo transfer? No, the third They will do the नहीं, self cycles करेंगे ना। Donor एक गोली में। cycles and they will get, करेंगे, सारों ने थोड़ी डोनर ही करे जाना। yeah. and डोनर वाले को थॉ करके एम्ब्रियो वो तो बनाएंगे। हाँ। जो आइडियल होना चाहिए, जो पेशेंट कहती रहती है मुझको अपना अंडा चाहिए, मुझे अपना अंडा चाहिए, कुछ तो डॉक्टर साहब सोनिया वाली कुछ सोचेंगे, ब्रिगेडियर शर्मा भी कुछ अपना दिमाग लगाएंगे। Start working on those areas. So the self-oocyte IVFs will increase maybe indirectly. Yeah. Like in Japan, they don't have a donor egg उधर है ही program. नहीं डोनर, जापान में है ही नहीं, वो कर ही रहे हैं ना। So India जापान में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है मैडम, चाइना में भी नहीं है। Ma'am, now we come to this. अगर कोई complication हो जाती है, in case of any medical or surgical complication to a donor or a surrogate, now who would be responsible for the further management, the bank or the clinic? This Of is course, another bank. question. देखिए डॉक्टर साहब, एक बात Of course, बताना bank, चाहती Dr. Jyoti. हूँ। मैं हियर एक छोटा सा बताती हूँ। LIC के अंदर है कि जो लोग हमारी जो लोअर पेड स्टाफ है उनके लिए कहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा 350 रुपए में, और अगर आपकी एक्सीडेंटली भी किसी में एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो आप 1 रुपया पर महीने दे दीजिए, इसका मतलब 12 महीने के लिए वो है। तो ये भी जितने भी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। डॉक्टर साहब 4 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस थोड़ी ना चाहिए हमारे को, तो आप एक लाइन लग जाएगी। हम अभी इसको कॉम्प्लिकेशन सोच रहे हैं, 400-500 रुपए का जो 1000 भी लगना पड़ेगा डॉक्टर साहब, वो आराम से देगा, क्यों नहीं देगा डॉक्टर साहब? उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और भाई जब प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर साहब हम तो झेलते हैं, सर्जरी में भी प्रॉब्लम होगा तो झेलेंगे, जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो झेलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कौन से रोज प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर साहब, ये मुझे बताओ। इतने सारे IVF सेंटर है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब डोनर PCOD के डोनर की प्रॉब्लम होती है। उसमें ब्रिगेडियर शर्मा ने हम लोगों को बता रखा, डॉक्टर साहब पिकअप करोगे 3 घंटे उसको लिटाओ वहां पे, उसका फिर अल्ट्रासाउंड करो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसको सारे वाइटल्स दिखाओ, और वाइटल्स दिखाने के उसका जो बंदा लेने आया उसको दिखाओ कि इसका BP ठीक है, इसका पल्स ठीक है, ये चल रही है, उसका वीडियो बनाओ और उसको दो। तो उस तरह के आप जब लोगे तो कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। ब्रिगेडियर शर्मा यही तो सिखाते हैं हम लोगों को। हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना डॉक्टर साहब। दिस इज व्हाट इज टेलिंग। आप यूनिफॉर्म फॉर्म्स बनाएंगे, यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल करेंगे, यूनिफॉर्म आपने ये सब डोनर के साथ बिहेव करना है, तो आपकी प्रॉब्लम्स कम ही होंगी डॉक्टर साहब। हमें ये देखना है कि हमारे जो 50-60 लोग हैं दिल्ली के अंदर, वो मैडम शिवानी हम सब हाथ लगाएंगे तो एक जैसी फॉर्मेटिंग करेंगे। एक आपने एक इंटरनल ग्रुप बना देगा बिफोर ICMR कम्स, आप अपनी इंटरनल ऑडिटिंग करा लो, इनसे भी सब ठीक है, फिर ICMR को आने दो। क्या प्रॉब्लम है? हमें डरना नहीं है डॉक्टर साहब। I think that's a very valid point. We should have some internal inspection team who comes to each clinic and says, okay, this is deficient in your clinic, please do it. Because, sometimes something may be overlooked by me or something overlooked by somebody else. So that before these government agencies come, so we have a uniformity, or yes, everybody is having the same thing. Very nice. Like, see, when I was in Primus Hospital, there was one person who was retired from PCB entity. So the hospital had hired him. So they used to give him some money and he used to come and check all the forms so that there is no deficiency somewhere. So that anytime the PCB entity would come, that everything was right. Similarly, I think we can have such a team where, they can go and see and guide if something is deficient in that center, so that whenever there is an actual, inspection, there is no problem to anyone. That's a good idea.
good idea. Jyoti, you are on mute. No, I just said that's a very good idea, very, very valid point. Malik is on mute. But Sunita, you can also speak something if you want. Yeah, so as Dr. Sharma said, this internal audit thing, sir, this is very, very good. Like for, we already have an existing system where an internal auditing is existing for us. And we get auditing done at regular intervals before, like PCP, NDT people. I mean, we can never predict. It's always a, they don't give any intimation before coming, but at regular intervals, we are having this internal auditing system. And as far as donors are concerned, if we make this thumb of rule that always, few points like always an agonist trigger, not to overstimulate, which we are already following. So as Dr. Sharda Jain ma'am is saying, that those centers who are already in compliance with so many things and are working properly, it should not be a problem, even if all these laws come. But yes, there are so many gray zones, loopholes, so many things which are needed to be discussed further. And Jyoti, you conducted that meeting in which IFS, ESAR, everybody, all bodies were there. And Yeah. Dr. Sonia Malik ma'am was also there. And that time we jotted down all the points, all the gray zone areas, which we will be putting forth to the committees. So similarly here also, again, we can shortlist all those points of discussion today again, so that we have that list ready with us, that these are the points which should be discussed further. And these are the points about which we are still confused, what to do, what not to do. And we can again, sort of put efforts from our side before these policies or this law gets notified in Gazette. Very rightly, Dr. Sunita, I think already those short points that we had shortlisted have already gone to Dr. Pai, and Radhika has already made a sort of, has covered them medico-legally and forwarded it to him so that he can further discuss with the close group that in the IFS and ESAR is. So already I think maybe वही है शेर आया करके, because the law has come, we are feeling baffled. It is not that we were not following anything or we were doing anything wrong. As it is, we were already doing everything rightly, but now because it has been with the PCP NDT, that is why we are feeling a little uneasy, because sometimes Sharda Jain ma'am, the PCP NDT people, they start pushing their load on you. I mean, without we doing anything wrong, still they want to catch hold of you and they want to sort of harass you. That is because that harassment thing we are scared of. Otherwise, I don't think anybody else, there's any point of scare. डॉक्टर ब्रिगेडियर शर्मा ने आंसर दिया है और मैं अपने सेंटर की बात करती हूँ डॉक्टर। एक बार हमारा कागज जो है 3 तारीख को भेजा मैंने और उसने कहा 4:30 बज गए, बेटा तुम कल आना। तो वो लड़का कल तो भूल गया, वो 5 तारीख को पहुंचा, फिर 4:30 बजे पहुंचा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से आए? उसने कहा डॉक्टर शारदा जैन के सेंटर से आए। तो उसने कहा अब आपका सेंटर बंद होगा क्योंकि आपने तो टाइम पे नहीं दिया। एनीवे मैं इस बात में छूट गई डॉक्टर साहब कि उन्होंने आधा घंटा पहले वो पहुंच गया था और उसने बताया कि वो आधा घंटा पहले पहुंच गया था। तो डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम डॉक्टर वालिया होते थे। डॉक्टर वालिया ने उस ऑफिसर का छुट्टी करी और उसने कहा कि इस तरह से आप हैरेस करते हो इन डॉक्टरों को। तो अगर आप अबाइड करोगे रूल को तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उस टाइम से डॉक्टर ज्योति ने क्या किया, हमने रूल बना लिया अपने यहाँ। हमने 5 तारीख डेट नहीं बनानी, हमारे यहाँ 1 तारीख डेट है भाई। 1 तारीख को हमारे यहाँ से कागज निकल जाने चाहिए। और भैया तुम जब आप कागज करके वो कागज मुझे दिखाओ कि तुमने वहां सबमिट कर दिया। तो डॉक्टर साहब ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग अपने स्टाफ पे छोड़ देते थे अब नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब फाइन जो है आपका 10 लाख तो फाइन है और 5 साल की आपको जेल है और आपको एक नहीं, इधर फाइन और जेल और बोथ। Yes. And मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंटर्स हम most of us are already so compliant, हम लोग वैसे ही बिल्कुल strictly डर के काम करते हैं, like as you said 1 तारीख को जमा होना ही है। So for looking at all this compliance is not going to be an issue for us,
but things like donor का जैसे 7 oocytes only who will be stimulating all those अरे things like- मैडम 7 oocyte का मतलब है 7 जो फ्रीज कर रहे हैं वही होंगे डॉक्टर साहब। इंटरप्रिटेशन की बात है, आप अभी घबराओ मत, क्योंकि जिसने बिल बनाया है ना उसको कुछ नहीं मालूम, पर उनको एक चीज मालूम है कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ, जो डोनर है आपको, आप उसको 40,000 50,000 रुपए देगो एजेंसी को, उसने उसको क्या दिया हमें नहीं मालूम डॉक्टर साहब। एक्सप्लॉइटेशन तो होता ही होगा डॉक्टर साहब। होता है। जी। So, very मैम उनको nice. 15,000 भी नहीं मिलते। Yeah, Dr. Aruna, you would like to add anything? I was just asking you, Dr. Jyoti, is there, I mean, जो हमारा नया ART law आया है, is there a standard format of consent and what kind of information we're going to store? Have they formed a format too for these things or I not? don't think they would be giving us consent form. That is what we are all discussing here, and under leadership of Dr. Shada Jain ma'am, we will form uniform consent forms. So that is what a big organization like DGF can do, so that we have a uniformity. Yes, ma'am. डॉक्टर साहब कंसेंट वही देखो, डीजीएफ का तो एक बात बता, डीजीएफ के पास पैसा नहीं है, फॉक्सी के पास पैसा है, पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमें बिना पैसे की भी हम अपना आराम से काम कर सकते हैं। हमने कोई गलत काम नहीं करना डॉक्टर साहब। जी, right, ma'am. डॉक्टर साहब वही फॉर्म है, and what Dr. Brigadier Sharma has said, under his guidance, under Madam enlightened person like Shivani and Dr. Sonia Malik, who are running these kind of things, who are, the large bodies as far the IVF is concerned. We will take guidance from them और एक फॉर्मेट बनाएंगे, 1 मिनट लगेगा डॉक्टर साहब, सबके पास फॉर्म पहुंच जाएगा। वो फॉर्म पहुंचाना मेरा काम है। So मैं इनिशिएटिव लेके एक आईवीएफ का जो दिल्ली एनसीआर में आईवीएफ क्लिनिक्स हैं, उनमें से एक बंदा जो इंचार्ज है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं 5, 7, 10 दिन में। डॉक्टर साहब ये आपके पास एबट के पास लड़कों के पास 250 नंबर है, वही बना देगा आपको। हाँ, मतलब एक ऐसा ग्रुप बना ले जिसमें बस आईवीएफ की क्लिनिक का जो रिलेटेड पर्सन है, बस वो एक बंदा उसमें हो, ताकि वो सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर ओनली सकें। विलिंग पीपल लो, ये वही हो जाएगा डॉक्टर साहब। जो कि मेडिकल लीगल वाला जो चीज है, पहले हाथ बोलेंगे 100-200 लोग हैं, फिर बाद में 30 लोग आएंगे, तो डॉक्टर साहब विलिंग लोगों को लेना है, हमें किसी के पीछे नहीं जाना डॉक्टर साहब, वो हमारे पीछे आएंगे डॉक्टर साहब। अभी हम जितने आ जाए यहाँ पे उतने चालू कर देंगे काम, ठीक है। जो लोग ब्रिगेडियर शर्मा से ट्रेंड है, मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग ब्रिगेडियर शर्मा से ट्रेंड है उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को भी नहीं है। उन लोगों को तो डरने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ना डॉक्टर साहब वो एथिक्स वाला काम करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को एथिक्स बता रखा है उन्होंने। हमें छोटी मोटी बातों में परेशान नहीं होना। खाली डॉक्टर साहब ने कहा आपने इंटरनल ऑडिटिंग करेंगे, सबके कॉमन फॉर्म्स होंगे, एक डॉक्टर साहब A to Z लिख देंगे कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये करना, आपने ये फॉर्म्स करने, सब लोग एक फॉर्मेट से काम करेंगे। डॉक्टर साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें परेशान नहीं होना। Right, ma'am. So, परेशान इसलिए हो रहे हैं because there are so many punishments there, and not only for the doctor, there are punishments even for the intending couple or the woman who violates the provisions of altruistic surrogacy. So, it is not only the doctor, the intending couple also can be imprisoned for a term which may be extending from 5 years and with fine, and which may extend to 5 lakh for the first offense, and subsequent offense for imprisonment of 10 years and a fine up to 10 lakhs. So, मैं डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। डॉक्टर शिवानी हैज टू शेड आउट गिविंग a 5-star कल्चर टू their clients. उनको बोलना भैया तुम्हें सरोगेसी का काम मैं करूंगी, पर तुमको सरोगेट लेके आना, वो लेने के जो आप अभी तक उनके लिए काम कर रहे थे वो उनके पर छोड़ देना डॉक्टर साहब, वो अपने आप करेंगे। आपको आप 4 पे 5 पे खाली आपको 7-star कल्चर नहीं देनी उनको। अभी तक सारा आप काम करे तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है। Yes, ma'am. Yes, नो ma'am. अदर ऑप्शन, आपके पास ही आएंगे वो। Oh, yeah. So absolutely right, ma'am. We now the terms of punishment are so strict. That is why we are all scared, because what are the terms which if we don't comply with them? So we have again that Dr. Shivani told us imprisonment for a term which may extend up to 5 minimum of 5 years and a fine of minimum of 10 lakhs. So this is the minimum that they have started with, 10 lakh and a 5 years, and maybe not only each, it could be both. And in case of subsequent offense, it goes again back to a period of
5 years, and I think how much is it now? I don't know. It is not mentioned here. In case of subsequent continuation, the offence, the name of the registered practitioner shall be reported to the State Medical Council, and the name will be taken off from their register and the suspension of registration would be done of his clinic for a period of 5 years. So these are the offences. So that is why we are just talking of them. And also not only that, the punishment for the even for the ART banks, the geneticists, gynecologists, all this I think Dr. Shivani spoke to us in great detail. So now whoever contravenes gets all this rigorous term imprisonment, not less than 5 years, mixed into 10 years and 10 lakh rupees, or even 25 lakh rupees, or with both. Now, what is the Dr. Brigadier Sharma sir? Now the bill has already been notified. So when do we start talking, getting it in practicality? So when do we start talking of the time frame? How much time we should think about? Then it will be the law. That is your question, no? Yeah. Sir, unmute करिए. First of all, I think we should start discouraging our patients for this surrogacy especially, because the problem is that even if, there is still some time, 1 or 2 months, by the time, it is notified. But the thing is, at the time of delivery, no hospital will take it because they have not registered themselves for surrogacy patient delivery. So I think for the time being, in case we can motivate the patients to wait, till such time the laws are very more clear, that will be better. But at the same time, there will be some patients, for whatever reason, they have already booked with you for a long time and they want to complete it. So I suppose you try to finish off within 1 month. Don't wait for 2 months or 3 months like that, 90 days, because otherwise, it will be too late. So we are now in catch-22 situation where on one side the patient says, I already registered with you and you have, failed to give me the services. Okay. And I've already paid you some amount earlier. And second side is the government who says, no, you should not do it. And third is that it is not only 1 month's treatment, it is a 9 months delivery also afterwards. So I think we have to draw the balance. No new registrations, and even the old registrations also, there are some nice patients also. We can always talk to them, would they like to wait, telling that at the time of delivery they may have problem otherwise. So if they are ready to wait, it's fine. And those who are not ready to wait, we should try to, complete them within 1 month's time, and then I think that is my feeling. What's your would like to say? Yeah, Shadajan ma'am, we should all be clear. I find, the legal aspect of this is that already the cases who are just pregnant, those people till 9 months, it is going to be covered in the old ways, So this particular part, Shivani is going to definitely highlight it. Till every laws are made, the boards and the central board and the state board and, the laws are framed. This will take at least 4 months' time. 19 days. But only thing what I will suggest to you is that if you were hiring a surrogate for your clients, that you stop doing it. You have to take an affidavit, which 10 रुपए के paper में आपने affidavit लेना है. I am his relative or whatever it is, and I have not charged anything from this particular bank. बस हमारे को ये कि हमारे हमने कोई पैसा नहीं दिया आपको. We are only going to do IVF work for you, and that is all our job is. हमने ये बीच में अब उनको सैरोगेट हायर करने वाला काम है वो बंद कर देना. Ma'am, but what about delivery of surrogate? Yeah, that is delivery of surrogate में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप ART बिल का एक बार दोबारा देख लीजिए, वहां पर जाके ICMR में बिल्कुल वही डिट्टो है. आप उस पेशेंट के पुराने नाम पे नहीं कर सकते. पेशेंट लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब उसको जब वो दाखिल होती है हमें नोटिफाई करना पड़ता है मेडिकल डायरेक्टर को उस अस्पताल को कि दिस इज अ सैरोगेट मदर और ये इसके क्लाइंट होने वाले हैं, इनके नाम पर फाइनली बिल बनेगा. पर लड़की ये सैरोगेट है, पैदा ये करेगी, नाम पे इनके बनेगा. ऑलरेडी एवरीथिंग इज देयर. डॉक्टर साहब जो काम सैरोगेट का कर रहे हैं उनको मालूम है डॉक्टर साहब इसके बारे में. डॉक्टर शिवानी आप क्या कहेंगी?
The clinic also needs to be registered, जो उनको deliver करेगा मैम. डॉक्टर साहब उसकी बात आने दीजिए, जब आएगा ना लॉ रोल होगा तो तब होता रहेगा. वो भाग के करेंगे अपने आप को रजिस्टर, क्यों नहीं करेंगे डॉक्टर साहब? Yes, ma'am, exactly. The date of implementation will come, then the budget has to come for the boards because they will, first the payment will be sanctioned, the budget will come, then the board will be appointed and then we have to send the application. But irrespective if the board is appointed or not, then the day comes that from this day it is implemented. We have to stop all the procedures overnight because this is what happened in international surrogacy also. The email came at 8:30 p.m. in the night. We had embryos in the incubator. We have discarded everything. We have not done any embryo transfer. So I am telling all patients that these things happen overnight. Today I have done your ICSI. Tomorrow if the bill is implemented, nothing will be done. Everything will be stopped. So when the implementation date comes, we have to take a pause and we have to evaluate everything. And Shivani, can you make it clear to us about the eligibility certificate and the certificate of essentiality and all? Who would be providing all this? See, first the date will come that from 1st of February, the implementation is there. After that, there is a period of time when the appropriate authority will be appointed. Then we will apply to the appropriate authority to get registration. They will come and visit your clinic. Then they will give you registration. Ideally, all this should be done in 6 months. But you can't say that I'm still continuing as per the old practice. You can't. You will have to stop commercial. Means you cannot pay any egg donor. Even if the ART bank is paying, you know they are paying, you are taking that egg donor. You can't do that because the date has now come. So Dr. Shivani, that means we cannot go ahead with the egg donation as well. डॉक्टर ज्योति कुछ कह रहे थे. डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, आप कुछ बोल रहे हैं? Yeah. I just wanted to know, Dr. Shivani, the day the actual act comes, we have to apply within 90 days. So that means till we get a registration, can we continue our IVF or we can't? No, Dr. Yes, Jyoti, ma'am. we Yes, don't have ma'am. to We apply can continue, but we can continue only following each and every point which is there in the bill. Means the date of implementation comes, आपके हॉस्पिटल में हमें बैठ के एक बोर्ड बनाना होगा which will like approve all the cases, which will be the grievance cell. So from that day we have to be ready to go immediately on that day according to the new bill. Yeah, जो आपने स्लाइड, अपना पिछला स्लाइड था ना जिसमें आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिल इज नोटिफाइड. इट इज नॉट येट नोटिफाइड. इट इज देयर इन द गजट एंड वी आर वेटिंग फॉर इट्स नोटिफिकेशन. नहीं, it is notified in the gazette. Gazette में notify हो चुका है, but उसमें date of implementation नहीं आया. डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बोला था एमटीपी का बिल नोटिफाई होने के बाद डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने बाद आया था. Yes, So yes. this was by Radhika, the lawyer, the fertility lawyer, who. No, it is notified in the gazette. उसने खुद ही लिंक भेजा है. So the bill being in gazette and being notified, these are two different things. We can again. नहीं डॉक्टर साहब, clarify. गजट No, का no, मतलब ये date law of हो गया है. implementation is there, not 6 notification. महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है. Okay. Dr. Geetendra So, Sethi. one more thing that has come, grievance cell जो आया है, what is the body? Who all would be in the grievance cell? Every hospital has डॉक्टर to साहब make. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम लोगों ने अपनी क्लिनिक में एक इतना लेटर बॉक्स जैसे लगा रखा है. आपको कोई ग्रीवेंस है आप इसमें डालिए. आप बोलोगे कि हर सैटरडे को इसमें चिट्ठी देखेंगे, चिट्ठी हमारी खाली ही पड़ी रहती है डॉक्टर साहब. और So it लगना is पड़ेगा like वहां a पर. complaint box that routinely everybody has. हाँ बिल्कुल, जैसे एक चिट्ठी जैसे लगा देते हैं ना, हाँ. लेटर बॉक्स जैसा, उसमें आपकी ग्रीवेंस सेल जितने हैं डालो बस. बस उसको grievance cell लिख देंगे. So हाँ. it is not that we have to have a 2-3 people कि ये grievance cell डॉक्टर साहब, आपको इनके कुछ पास तो कोई बनाना तो पड़ेगा ही ना डॉक्टर साहब. एक आईएमए का बंदा ले लोगे आप, अपने 2 लोग बंदे ले लोगे, इस तरह से करके कुछ तो करना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपको. डॉक्टर साहब Right. बैठेंगे, ये फिजिकल ऑनलाइन से नहीं होगा, फिजिकल मीटिंग से काम होगा. पर पहले थोड़ा होमवर्क कर दो. डॉक्टर साहब मुझको वो 2 फॉर्म्स दिलवा दीजिएगा, एआरटी बैंक का और एआरटी क्लिनिक का. वो मुझे मेरे पास अगर भेज देंगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू. मुझे और डॉक्टर ब्रिगेडियर शर्मा दोनों को भेज देंगे व्हाट्सएप में. Right, Madam, ma'am. I'm just reading the line, which we were discussing. It shall come into force on such date as the central government may, by notification in the
official gazette appoints. So that is, as such date is not known as yet. So one night they may say, okay, from tomorrow onwards. Or maybe डॉक्टर one 6 month महीने तो onwards. जरूर लगेंगे, बोर्ड्स बनेंगे, सबको पता चल जाएगा कि ये सेंट्रल बोर्ड में है या इस स्टेट बोर्ड में, That's what सबको I'm पता saying. My चल जाएगा. suggestion is we should not register any new surrogates to be on the safer side. And whatever Yes. we have already registered, we should try to finish off them as early as possible. And if some people can be persuaded, they can wait till the notification occurs. So that also should be done so that you are on the safer side. And then we must take a letter from the patients why they want a surrogacy. Because they must say that I had endometriosis and my uterus was removed because of pain and all ovaries were removed, everything was removed. So, it's a medical reason for I am, getting it done. And her own documents and all, we should keep it. Because tomorrow when the board comes to you, they say, okay, you did it 6 months beforehand. What was the indication of doing surrogacy in that case? So you will not have any documents with you. So in the file of the patient, so we have a file like this for each patient in our center. So in this only we will, put a paper, her application. The patient is requesting me to do the surrogacy for her because she is having, say, hysterectomy done for previous reason, or she had recurrent abortions, and these were our medical documents. So tomorrow somebody comes, even if I had done it before the law was made, that time also I was doing by law, and in future also I'll do by the law. Now the thing is that what will be the role of ICMR? Because now it will be national board, district board, state board. So we have already, filled up our forms with the ICMR. So what will be the role of ICMR in whole this business? I'm not sure. So the center is being registered under ICMR only because they would be registering the ART centers, no? No. The ART We'll have to Later on, register it with the will board. be taken over by appropriate authority. It will taken over, it will come under the central board. Yes. So what will be the role of ICMR? Nothing. डॉक्टर आईसीएमआर का तो रोल ये है कि आपने अगर आईसीएमआर में आर के शर्मा को देखा वो उनके पास एक कमरा मिला हुआ है और उनके पास 2 स्टाफ है और एक उसमें इतनी फाइलें लगी हुई है डॉक्टर साहब. बट ये इनका एक रोल है कि इन्होंने एक बिल बनाया था और उसको उन्होंने पार्लियामेंट से पास करा दिया. ये उनका सबसे बड़ा रोल है डॉक्टर साहब. मैम लेकिन अब वो फॉर्म्स हमें भेज रहे हैं कि ये भर के भेजो, तो ICMR इज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी. इट इज वही इसका कोई मेंबर तो जरूरी रहेगा डॉक्टर साहब आर के शर्मा. वो 2 फॉर्म भाई मुझको तो मैंने शायद मेरा ईमेल हाथ देखती नहीं हो, आप मुझको फॉर्म जरूर भेज दीजिएगा. ईमेल के अंदर है. आई थिंक आई हैव देम, आई विल सेंड. So I think we now up to what period gametes can be stored? I think not more than 10 years. 10 years. और ये जो बात हमारी आ रही है बार-बार, this question is coming up. What is the maximum number of oocytes that can be received from a single donor? This is the point of concern every time. So every time they say 7. So this magic 7 figure, I think this is a misinterpretation. We can collect all, but we can use 7 at a time for one person and store the remaining for the same patient. This is my thinking. और डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब ब्रिगेडियर शर्मा कहेंगे कि ये माइल्ड प्रोटोकॉल यूज करो और 10 अंडे निकालने का अपना एम रखो. 10 में 3 तो खुश हो जाएंगे, 7 ही मिलेंगे आपको. पर मैम हमने तो यूज ही नहीं करना ना, ये तो ART बैंक वाले ने करना है. हमें तो उसने 7 वही देने हैं. हमारा तो कोई रोल ही खत्म हो गया उसमें. डॉक्टर अभी टाइम लगेगा. आपको सेल्फ साइकिल का तो परेशान नहीं होंगे डॉक्टर साहब बिल्कुल भी. I think otherwise then we every time we take out the eggs we'll write the magic number 7 कि 7 ही निकले बस. ठीक है. डॉक्टर पब्लिक में नहीं बोलते. डॉक्टर ज्योति मलिक पब्लिक में नहीं बोलते. मतलब they are putting हमारे मुंह में वर्ड डाल रहे हैं ना कि you have to. नहीं डॉक्टर Dr. Jyoti, this will be next presentation in Ashray, the magic of 7. डॉक्टर साहब ये अरुणा बताएगी. डॉक्टर साहब Yes, छोटा सा देश है सिंगापुर, वहां पर डॉक्टर साहब एक छोटा सा भी एग है ना उसको भी ट्रेस करते हैं डॉक्टर साहब.
उनका सारा डिजिटलाइजेशन है हर चीज को। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं डॉक्टर साहब हमने 20 अंडे थे और हमने 7 अंडे निकाले डॉक्टर साहब। तो ये वहां पर तो हर एक का ट्रेस करना पड़ता है। Yes, ma'am. Ma'am, you are. तो अगर वो कंट्री कर सकता है तो हम भी कर लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? So all the oocyte donors shall donate oocytes only once in a life and not वो more तो than बिल्कुल ठीक है 7. डॉक्टर साहब, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ. And not more than 7 shall be retrieved from the donor, and all unused shall be preserved by bank for the use on the same recipient or given for research to an organization registered under this act after seeking written consent from the commissioning couple. So everything we understand, but except for this 7, which also has been suggested to the higher authorities that what 7 means 7 mature eggs approved by the embryologist. 7 mature good quality eggs approved by the embryologist. But unfortunately, madam, that is being done in the ART bank. Because ART bank will not have that much of standard because they don't have to face the patient to give the pregnancy rate. They will say these are very good eggs and they will freeze it and give it to you. Because you have to face the patient when you make the embryos, the embryo quality. There's going to be problem. There's going to be a problem. Yeah, Sonia ma'am, please, your comments, please. Oh, my comment is that sooner or later we will have to stop donor egg program. Because ma'am वो cost friendly रहेगा ही नहीं. It will not be cost friendly. I don't know what will happen. Patient कहाँ से इतने पैसे पे करेगा? पैसे कहाँ से पे करेगा? सारा कुछ ही हो रहा है। मैं तो सोचती हूँ डॉक्टर साहब, घबराना बहुत जरूरी है, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है, बोलो कि बस मुझे ऑनेस्टी से काम करना, सब ठीक होएगा। हाँ, वो तो है ही। और मैडम आपने तो डॉक्टर उनको रख लिया ना अपने साथ, डॉक्टर शर्मा को उनके पास। और मैं तो कहती हूँ सब लोगों को ना, जितने भी ART लोग यहाँ पर हैं, अपना 10,000 रुपए का आज ही जरूर चेक डाल दे रहे डॉक्टर साहब। वो संभालेगा ना सारा कुछ डॉक्टर साहब, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, उनके पास ऑलरेडी कंसेंट फॉर्म्स है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनके पास ऑलरेडी कंसेंट फॉर्म्स है फॉर ऑल दिस। हम लोग उनसे ले लेते हैं, खत्म बात, यूनिफॉर्म हो जाएगा। कंसेंट फॉर्म तो हमें वही उनसे ले लें, कोई परेशानी की बात ही नहीं है डॉक्टर। बस खत्म। और क्या, हमें फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा ना सबकी। हमारे तो डॉक्टर बीजेपी के पास अपना तो कोई पैसा है नहीं डॉक्टर साहब, पर एक बात है, हमारे पास बहुत बढ़िया लॉयर है दो। बस Jitendra Sharma is there. We invite him to speak also. I know that's what I'm saying. उन्होंने कहा डॉक्टर जैन मैं वहाँ बोलूंगा नहीं क्योंकि ये सब कंट्रोवर्सी है। डॉक्टर जितेंद्र आप इनको बोले, सब लोग बड़े परेशान है। 10 साल से पैदा। More lawyers than embryologists now. No, Shivani, I think like Dr. Sharda is saying, we are scared because we are stepping into unknown territory. But now see, we are quite settled with the PCPNDT Act. Once we have started doing it or implementing it in a clinic, we are all right. There is not so much of a problem. So I think sooner or later we'll get used to this also. And we won't have all these hurdles. It's just a question of getting used to it. So initial hesitation hai, but then I think we'll be able to overcome it. It's not so difficult. Doing more It's not paperwork. actually, like Dr. Sharda says, we have to win over those NGOs who have actually planted this act on us. They did not listen to what we have been saying for the last so many years. We have represented, but nobody listens, thinking that, doctors are not so honest and genuine. PCPNDT एक्ट में तो वो लोग सोचते हैं कि जो आपका PGD है ये खाली सेक्स सिलेक्शन के लिए। मैं वही कहती हूँ ना, दिमाग में घुसा हुआ। इसमें भी वो यही सोचेंगे ना कि हम सब कुछ डोनर ही कर रहे हैं। वो तो जो उन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें द फर्स्ट लाइन इज IVF centers are embryo making factories. This is the line that they have used. So I mean, this is rubbish, na? 1% of the total infertile population of the country is going in for surrogacy. Only 1%. And look how badly they have presented this whole thing because of the NGOs. So we have to stand up against them. आप ठीक कह रहे हो, सब कुछ honesty से करेंगे तो कौन हमें कुछ कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता। It will be all right. डॉक्टर साहब एक बार AOGD की कॉन्फ्रेंस में एक हमारे पास अबॉर्शन के ऊपर एक लेडी बोलने लगी। उसने अपने नाम डॉक्टर लिखा, तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैडम आप कहाँ पर काम करते? तो उसने कहा no, I am not a medical doctor, I am a PhD. So डॉक्टर साहब 3/4 of the crowd got up and went away, Why? मैंने सुना। अरे
Why should we Why? listen to a lady who's a non-medico about the abortion? So doctor, these people sit in a Mercedes car and अपने NGOs के head बने हुए हैं. इनको कुछ नहीं, इनका काम ही है कि हमारे लिए ट्रबल तैयार करना. मैं डॉक्टर साहब एक लॉ यूनिवर्सिटी की मीटिंग में मुझे बुलाया गया था एज एन IVF एक्सपर्ट एंड देयर वर दीस NGOs sitting over there. When I started talking about surrogacy and how and the third party reproduction and how well these people are treated by us, 3/4 of them went away. They just left the hall and went away. They didn't They want don't to want to listen. listen. They don't have want to listen. They don't want to listen. They have framed their own ideas. They are resistant. और उन्होंने एक हमारी इमेज बना ली है जो वो चेंज नहीं करना चाहते. Bas, But bas. that So is we the have to problem. fight against the image now. We have That to is the fight problem. against that image. And you know, that is somewhere we are to be blamed, as Dr. Sharma said. We have been advertising so much and we have been, you know, desperately trying to get patients, which is so bad. Desperate बस is वो the word. जब भी अति होने लगती है ना किसी चीज की तो फिर हाँ। उसमें ये कुछ फिर आता ही ये है. सब कुछ डॉक्टर को ना सारे हिंदुस्तानी डॉक्टर कहते हैं हमारा 100% रिजल्ट है. हाँ, 100% तो कमी नहीं होता डॉक्टर साहब. बिल्कुल नहीं. और और मैम ये जो ऑटो के पीछे ये हाँ, IVF सेंटर, हाँ, ये रेट्स, वही ये सक्सेस, ये डॉक्टर फ्री साहब ऑटो फ्री आपको कंसल्टेशन. सिनेमा हॉल में एडवर्टाइजमेंट आता है उनका. हाँ. Unfortunately, वो वही बात है ना, the owners of these chains are not doctors. और हाँ। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. That is why I think उनका एम्पैथेटिक एटीट्यूड ही नहीं होता ना, उनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है. तो So इसलिए I anyway, think we have to make one legal body who should stop all this. A body made डॉक्टर of जितेंद्र से doctors. बात करवाओ डॉक्टर साहब. डॉक्टर Yeah, जितेंद्र please. से बात. We should, I think, I'm sorry for that interruption, Dr. Jyoti. I think we should invite Dr. Gitendra only and we should sum up. Dr. Gitendra, please, आप हमें दिख नहीं रहे हैं. You are invited to speak. I didn't see him. Dr. Gitendra sir, he is there. है नहीं. Dr. Gitendra है? Sorry, yes. He's there. He's there, right there. सर कुछ तो बोलिए. Yes, that's it. हाँ, he is joined. Please, sir, आपकी last comment चाहिए, concluding remarks, sir. आवाज नहीं आ रही है सर. थोड़ा ऊंचा भाई सब बोलो. लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. सब म्यूट कर लीजिए सब लोग. मैं सुन रहा हूँ सबको मैडम, है ना, और सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं. सो इट इज वेरी गुड टू हियर ऑल ऑफ यू, है ना. बाकी अभी मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ART रूल्स नहीं आते हैं तो वहां तक पिक्चर कुछ क्लियर नहीं होगा. और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन एनीथिंग टिल वी गेट रूल्स इन अवर हैंड, है ना. सो मेरे को कई फोरम से इनविटेशन आता है. कई लोग बोलते हैं सर आप ART पे बोलिए आके. तो हम यही बोलते हैं कि लेट ART रूल्स कम, है ना. अदरवाइज फालतू क्या अपन डिस्कशन करेंगे, अपना दिमाग दूसरों का दिमाग खराब करेंगे, है ना. उसका कोई मतलब नहीं है. तो I was hearing today many things, many worries were there in the minds of all the gynecologists. But at this juncture, when there are ambiguities in act itself, multiple ambiguities are there. So only thing we should do today is that we should come out with what are the ambiguities in the act and don't overreact, है ना. कोई law illogical नहीं हो सकता है. As Sharda madam has said that no law can be illogical. और अगर illogical होगा तो वो टिकेगा नहीं, वो law कोई follow नहीं कर पाएगा, है ना. So it will automatically be vanished, है ना. कई law ऐसे होते हैं जो follow ही नहीं किए जा सकते हैं तो अपने आप vanish हो जाते हैं. So let rules come, है ना, and then we will discuss it in details कि क्या क्या करना है. In between what you can do, that you can make a list of things and you can put it at a proper place. अब जैसे हम बात करते हैं RS शर्मा सर हैं, है ना. तो RS शर्मा सर को हम हमेशा अपने ओपिनियन भेजते हैं. We have given multiple times to him our suggestion के 7x वाला क्या आपने चक्कर चला दिया कि डोनर को आप 7 से ज्यादा रिट्राइव नहीं कर सकते. Everybody in the committee knows that this is illogical thing, but still it is there in the act. तो ऐसा नहीं है कि RS शर्मा एक्ट बनाते हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं है वहां.
है ना? So there is not only one person. Okay. So through your different fora, you can represent, you can send your suggestions even today. And while framing the rules, they will definitely take care of all your suggestions. So that is the thing. बाकी जो है जहां तक सरोगेसी की बात है, I was hearing. So in the act itself, there is a provision. Section 53 is there, and in section 53 it is clearly mentioned that 10 months transition period will be given to everybody. So आज अगर आप सरोगेसी करते हो तो 10 महीने तक अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो वो पुराने लॉ के हिसाब से बर्थ रजिस्ट्रेशन बनेगा, तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. So even in this surrogacy act, you can go through section 53, that is the transition period, and that is 10-month transition period will be given to everybody. So multiple, see, I cannot quote one by one, but there were multiple discussions today were going on, which were not as per law. कई बार हम law को ज़्यादा अच्छी तरह से interpret कर लेते हैं, कभी-कभी misinterpret कर लेते हैं. So even I was hearing for PGD and PGS, that now it is not allowed, and only it will be allowed for pre-existing or these. ऐसा नहीं है ना? PGT will be allowed for all kind of suspected diseases. So if there is any patient who is above 35 years of age, or if they have any problem on sonography, so जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि rule out करना है हमको इनको genetic diseases को, so you can definitely do PGD and PGS, PGT particularly in that particular patient. In regard to PGD, you can do only in the patient where pre-existing disease is there either in male or female. So that is clear. बहुत सारी चीजें clear हैं. कई बार क्या होता है हम उसको over interpret करके हम puzzled होते हैं. There is no need to get puzzled. And one thing should be kept in mind that section notification and gazette. There I was hearing the discussion. See, notification in gazette is the word. So something is notified in Indian Gazette or State Gazette. So here notification of the bill act is already done. So now it is not bill. We should not speak on ART bill now. We should speak on ART Regulation Act 2021. And that act is now already there. But it is the date is not yet come. That from which date it will be implemented. So the date will be appointed once again by central government in the gazette notification. And once that date will be announced, only then this will come into action. Okay. So don't worry. And after this act will be enacted or date of appointment will come, it will be implemented on the very date, whether national registry is there or not, whether national board is there or not, whether state board is there or not. They will be formed. See, PCPNDT Act was enacted in 1994, but in 90% states, state boards and appropriate authorities were not appointed till 2001. And one of the social agency, CHET, संस्था थी, वो CHET ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि सर आपने लॉ तो बना दिया, बट कोई इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं लॉ का. You have not even appointed appropriate authorities in 90% states. And then after that it came into knowledge of Supreme Court. And Supreme Court ने जब थोड़ा उसको strict हुआ, सब authorities को ये सब state government को ये कहा कि you have to report every 3 months to Supreme Court directly that what action you have taken against how many doctors under PCPNDT and who are the authorities. After that, it was implemented. So, other doctors, even registration was done in 2002 under PCPNDT Act, not before that. So, the issue is that once this act will be enacted, we have to follow the act. Second thing, they will come out with the authorities within a few months, 60 days. Within 60 days, they will come out with national registry. And once national registry is formed, after that, within 60 days, you are supposed to apply for the registration.
ओके, सो अगर नेशनल रजिस्ट्री नहीं है तो आप अप्लाई करोगे ही नहीं, कहाँ अप्लाई करोगे ना? इट इज नॉट पॉसिबल. वंस नेशनल रजिस्ट्री विल बी फॉर्म. नाउ कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ICMR जो अभी है इसी को नेशनल रजिस्ट्री का स्वरूप देने वाले हैं फ्यूचर में. अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, नेशनल रजिस्ट्री विल बी ए सेकंड थिंग. सो देयर इज नो नीड टू हरी फॉर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर ICMR. उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी. ICMR में से अगर आपको फॉर्म आते हैं तो इट इज नॉट, यू आर नॉट बाउंड टू फिल दोज फॉर्म्स, बिकॉज अभी तक ICMR सिर्फ एनरोलमेंट करता था, है ना, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है. देयर इज नो एनरोलमेंट ऑफ ART बैंक इन इंडिया टिल डेट. एक भी ART बैंक एनरोल्ड नहीं है अभी इंडिया में. सो दे आर डूइंग ओनली एनरोलमेंट. ओके, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. So once act will come, once national registry will be formed, only then you should go for registration. And they will come out with the forms, relevant forms. See, हमको मालूम है पहले इन्होंने जो अनाउंस किया था, एक्ट बनाया था, है ना, बिल था जो, उसमें ये कहा था कि भाई ART clinics, ART banks and ART research center and ART clinics will also be a level 1, level 2 and level 3 clinic. है ना. लेवल 1 में यू कैन स्टिमुलेट, लेवल 2 में यू कैन डू अप टू IUI एंड लेवल 3 में आप सारा ART कर सकते हो. एंड 1 and 2 आर नॉट सपोज टू रजिस्टर. सो दीज थिंग्स विल बी क्लियर्ड ओनली इन रूल्स. अभी तक क्लियर नहीं है कि what is in the mind of government, what kind of registration they will demand for. So we should only pray and we should at least from our association appoint one person to represent yourself in a proper way. मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग सब अपने प्रेसिडेंट को, अपने सेक्रेटरी को खूब चाहते हो, उनको खूब नॉलेज है, उनको खूब प्रमोट करते हो, लेकिन you are not being properly represented in the government. And that is the reason we are suffering. Under PCPNDT Act, you all know that in Delhi you are filling Form F for follicular study. Even you are filling Form F and G and D, all forms for OM pickup and for embryo transfer for IUI, which are not procedure at all. So this problem is created by our colleagues only. So please appoint proper person to represent yourself and the hope everything will be fine. According to me, ICMR registration, if they are asking, should we not fill them up? definitely not. Dr. Gitendra, it is also possible that the ICMR may have got instructions from them to give them the list of registered. So, registration cannot be given to ICMR. Registration No, should be no. given to general public. They will definitely have another body, but probably they will demand the list. Probably that is why ICMR is updating. Madam, this is the problem of ICMR. Yeah, that's what I'm saying. Because they are not updated. अब उनके नीचे वो रेला आ गया है, इसीलिए हाँ, तो वही होगा ना. तो अगर उन्होंने लिस्ट दी, अगर गवर्नमेंट ने उनको, अगर उन्होंने लिस्ट दी और उसमें हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि हम पहले फर्क नहीं पड़ता. It was not mandatory to enroll in ICMR. It was because आप सर्टिफिकेट जो वो बाहर क्या जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिस में तो वो एंटरटेन ही नहीं करते. वो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ मैडम कि NABH जो है, इज इट मैंडेटरी? नहीं. नो. बट अगर आप TPA के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करोगे, नाउ इट विल बी मैंडेटरी. एक मिनट मेरे को सुन तो लीजिए. अगर आपको कैशलेस के लिए जाना है किसी TPA के साथ, तो वो डिमांड करते हैं कि इट इज मैंडेटरी. बाकी NABH इज नॉट मैंडेटरी. इन द सेम वे, अगर आपको फॉरेन पेशेंट को डील करना है, ट्रीट करना है, एंड यू वांट टू कम ऑन द नेशनल रजिस्ट्री, then ICMR registration is necessary. Yes. अगर आप ART क्लिनिक इंडिया में चला रहे हो, आपको फॉरेन पेशेंट का ज्यादा लेना देना नहीं है, उसकी वेबसाइट पे आना नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू वर्किंग इवन विदाउट एनरोलमेंट इन ICMR. इट इज नॉट मैंडेटरी. करेक्ट. किसी लॉ में नहीं लिखा कि ICMR में मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन और या एनरोलमेंट. अगर ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की होगी तो गवर्नमेंट शुड कम आउट विद द गैजेट नोटिफिकेशन दैट नाउ एनरोलमेंट अंडर ICMR इज कंपल्सरी. तो जस्ट टू प्रीएम्प्ट दैट, हो सकता है आ जाए, इसलिए आई थिंक अगर हम ICMR की भर देंगे तो बुरी बात तो नहीं है ना. बिकॉज हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, री रजिस्टर ही तो हो रहे हैं.
मैडम लोगों ने 2-2 साल से एप्लीकेशन दी हुई है, उन्होंने आईसीएमआर सो ध्यान रहा नहीं था, किया। हाँ, मुझे पता है। आईसीएमआर सो रहा था। हाँ। आप जब तक पर्सनली फोन नहीं करेंगे आरएस शर्मा को, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हाँ, एवरीवेयर देयर इज प्रॉब्लम। हाँ, 6 महीने पहले तो हमको ये वहां से न्यूज आती थी, जब किसी का हम आईसीएमआर अप्लाई करते थे ना, हाँ। कि द लेडी हु इज मेंटेनिंग द रिकॉर्ड इन आईसीएमआर इज प्रेग्नेंट, शी इज ऑन लीव, तो किसी का नहीं होगा 9 हाँ। महीने तक। हाँ, शी वाज ऑन लीव फॉर 9 months। हाँ। 9 महीने तक किसी का एनरोलमेंट ही नहीं हुआ। नहीं, वो तो बहुत साल से रुका हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हाँ, अब अगर उन्होंने रीस्टार्ट किया, या तो उनको डंडा पड़ा है, और या तो ये है कि भाई उनको कहा होगा कि शायद ये रजिस्ट्रेशन काम आ जाए। मैं तो इसलिए प्रिज्यूम कर रही हूँ कि क्या पता, यू नेवर नो, लाइक यू आर सेइंग, आरएस शर्मा उस बोर्ड में शायद जा सकते हैं। अगर वो जाएंगे तो फिर वैलिड हो जाएगा ना। नहीं, इसलिए I don't think- वैलिड हो जाएगा तो आपको तो टाइम मिलेगा ना। अभी तक जो चीज वैलिड नहीं है, तो वैलिड रजिस्ट्रेशन के लिए यू विल गेट द टाइम आफ्टर नेशनल रजिस्ट्री विल बी फॉर्म्ड, यू विल हैव अ टाइम फॉर 60 days। ओके, तो ऑल अभी राइट, जल्दी करने की क्या जरूरत है? अगर ठीक नहीं है। किया तो भूल जाओ। ठीक है। तो जितनी भी चेंज मैडम काम कर रही है ना, हम्म। उन चेंज में कोई भी अभी हमने तो जो जितेंद्र कहेंगे वही बात मानेंगे, और डॉक्टर ब्रिगेडियर शर्मा कहेंगे, और जो आप कहेंगे हम वही बात मानेंगे। नहीं, हाँ, वो मैं तो क्लियर ही कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है मैम, मुझे खुद तो नहीं जब तक पता। मैडम नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों का जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हाँ, हमारे पास नंबर मिला हुआ है, हम खत्म, चुपचाप बैठ जाते हैं। आप मैडम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो ना, फिर भी जब हाँ। एक्ट बनेगा ना, हाँ। अगर रूल्स में लिखा होगा कि भाई दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि पैसे तो मांगेंगे ना वो, अभी तो पैसे हाँ। नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। हाँ। फिर फी तो मांगेंगे ना वो। यू विल हैव टू री रजिस्टर योरसेल्फ आफ्टर पेइंग ए प्रिस्क्राइब्ड फी। आपको दोबारा करना ही पड़ेगा। So now if ICMR is asking without asking for money, I think there's no harm. हार्म कुछ नहीं, हार्म कुछ नहीं है, बस 36 पेज का फॉर्म है, भर दो। भर सकते हैं। और क्या। So nice, sir. So nice of you. Really, it's a wonderful panel today, and I think I must say thanks to Dr. Kitesh Sharma for the last moment and last concluding remarks. And I think it's too much time now, and we should now part up. And thank you very much. And the star of the ceremony today was Shivani, and my sincere thanks to Dr. Shivani. We are really enlightened today. And all my seniors, Dr. Sharma sir, Dr. Sonia ma'am, and Shada ma'am, and Jyoti Malik, Dr. Sunita, Dr. Poonam, and everybody over here, I must say sincere thanks to you, and have a good day, good life. Thank you very much. I think we Thank should. you. As Dr. Gitendra has said, that we have to give a spokesperson of ours, और जो भी हम लोग सब साथ काम करेंगे, तो हम लोग उसके बाद बैठ के क्रिस्टलाइज करना क्या करना है आपको। बस ठीक है। यंगर लोगों को फ्रंट में लाना, जिससे यंगर लोग जाके